everyone, my name is Manisha Singh and welcome to the e-commerce Guru channel. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कूपन क्रिएशन के बारे में। अगर आप Amazon पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, अगर आप एक Amazon सेलर हो, सो अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप ये बात जानते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ मेकिंग द सेल्स ऑन द Amazon। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कूपन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं Amazon पर। बेसिकली कूपन्स हेल्प करता है टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स which will turn in the which will help you to improve your sales, or any kind of promotional offers or a coupons can automatically draw the buyer's attention to your products. And every customers which is who are eagerly looks for some offers while they are shopping on the Amazons. So as a sellers on the Amazon, you can also create the coupons for your buyers, for your customers, and through this you can increase the chance of getting more and more sales. You can also offer the discounts, attract the customers, which will help to your online stores. So before starting this, please subscribe the e-commerce Guru channel and hit the bell icon for more videos updates. Also, if you need any advice for your online e-commerce business or digital marketing services, e-commerce services, then please contact Tech2Globe and Services for Amazon. Or if you want to learn e-commerce or Google PPC or Amazon PPC or digital marketing from us, then you can simply go to our website www.ecommerceguru.com and contact us on the given number which is on the screen. So let's get started. Basically, if you are offering the discounts which will help the customers to your online store, then your traffic will be increased, your visibility will be increased on the Amazon Seller Central account. All you have to do is you have to make sure that you advertise your offers very clearly while writing the descriptions. So I'm going to show you how can you write your coupons descriptions. So first of all, you have to log in your Amazon Seller Central account, and after login Amazon Seller Central account, go to the advertising tab and drop down menu, click on the coupons. So this is your coupon page. So you have to do is create your first coupon. So basically, if this is your first coupon, then click on your create your first coupon. So basically on the coupon page, you can choose to create one coupon at a time or create coupon in bulk by using the Excel sheet or the spreadsheet. Also, one more important thing, to create one coupon at a time, you need to follow the steps what I am showing you on the screen. So in this video, I am not showing you how can you create in the bulk. Simply you can learn the how can you create a new coupon on individually. Now you have to enter your product name or ASIN. I'm entering my product ASIN. So after this I have to choose one product. So for example कि मुझे इस product के ऊपर अपना coupon बनाना है, अपना discount चलाना है. So click on the box and click on continue. So this is my coupon page. So here you have to set the durations of आपको starting date और end date यहाँ पे select करनी पड़ेगी. For example, let's say I select 26 April और मेरा end date होगा 22 May. Okay. One more important thing, Amazon एक चीज बोलता है कि when you select today as a start date, then it will take up to 6 hours after coupon submission for your coupons to be visible to the customer. जब आप आज की डेट सेलेक्ट करते हो तो Amazon कहता है कि आपके जो कूपन होगा वो 6 सबमिशन के बाद, जो 6 आवर्स के बाद ही वो आपके कस्टमर्स और बायर्स को विजिबल होगा. ओके, नाउ यू हैव टू सेट द डिस्काउंट. सो बेसिकली you have to choose between percentage off or the money off discounts, and you have to enter the discount that you would like to offer.
Okay, so basically this value has to be percentage of or the money of discount. And one more important thing, the minimum and the maximum discounts for the coupons are 5% to 80% respectively. So let's say कि मुझे 20% का डिस्काउंट देना है अपने कस्टमर्स को, so I'll write 20. Okay, now you have to set the budget here. आपको यहाँ पे अपना बजट भी सेट करना होगा. लेट्स से कि मैं यहाँ पे सेट करती हूँ 80,000. So 80,000 is my budget. Now I have to enter the coupon title. Basically title is very important for attracting the customers and the buyers. Okay, uh, also one more important thing, when you are creating your title, please read the title guidelines. So let me show you what Amazon says. Basically Amazon कहता है कि जो आपकी कूपन टाइटल होगा वो कस्टमर को आपके कूपन की जो इमेज होगी उसके नीचे नजर आएगा while they are searching the coupons on the coupons homepage. And for a standard customer experience across the coupons, Amazon automatically generate the first 3 words of your coupon title. Amazon खुद ही आपके कूपन टाइटल को फर्स्ट 3 वर्ड को जनरेट कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल से 50% ऑफ, and all you have to do is to define the products you added to your coupon. In the other words of the products the savings will apply to. एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू एड डिफरेंट साइजेस एंड टाइप्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर टू योर कूपन, देन योर कूपन टाइटल कैन बी लाइक save 50% on the hand sanitizer. Also one more important thing, please note that when you are entering the title, when you are creating the title, please do not enter the offensive or the prohibited words like अगर कोई सेल चल रही है, कोई इवेंट्स चल रहा है, so it should not be like the percentage day or black day, sorry, it should not be like the prime day or the black friday. You cannot enter this type of title on the title page. So you cannot enter this type of title on the Amazon while creating the coupons. So if you are if failure to comply these rules may result in your coupons being deactivated by the Amazon. अगर इन सारे रूल्स को आप फॉलो नहीं करते तो आपका कूपन Amazon के पेज से डीएक्टिवेटेड भी हो सकता है. So now we have to write the title. So I would like to write something like bottle. So I'm selling the bottle on the Amazon just for the examples. Now I have to select my targeted audience. For examples, let's say कि मैं सिर्फ Amazon Prime members को ही अपने कूपन्स वाला जो बेनिफिट है वो देना चाहती हूँ, मैं ऑल कस्टमर्स को नहीं देना चाहती. यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ऑल कस्टमर्स और दी Amazon Prime members. सो लेट्स से कि मुझे सिर्फ Amazon Prime members को ही ये बेनिफिट देना है. सो आई एम क्लिकिंग ऑन दी Amazon Prime members. तो Amazon यहाँ पर बोलता है कि आपका जो कूपन है वो सिर्फ और सिर्फ Amazon Prime members को ही विजिबल होगा. अगर आप if you are not a part of the this targeted segment, then you will not see the coupon. आप नहीं देख पाओगे. Now click on continue. So this is how my coupon detail page will look like. कूपन टाइटल सेव 20% ऑन बॉटल, डिस्काउंट में दे रही हूँ 20% का, बजट है मेरा 80,000 का. स्केड्यूल डेट जो मेरी होगी, जो मेरा कूपन चलेगा वो 26 से लेके 26 अप्रैल से लेके 25 मई तक चलेगा. मेरी टारगेटेड ऑडियंस जो रहेगी वो Amazon Prime members रहेगी. सो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स you have to click on the submit button. One more important thing, it will take approximately 6 hours before the start time. Your coupon will be locked down, and at this time Amazon system run the validation rules on the sellers coupons so that they can make sure that their offers is a good value to the Amazon customers or the buyers. And once it locked down, as a seller you will not be able to make any changes to your coupon until it goes live. And after the coupon goes live, you can increase your budget or extend the duration up to 90 days maximum. So now I'm gonna click on this. So after you clicking on it, your coupon will be submitted to the Amazon. So I hope guys कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको
समझ में आएगा कि कैसे आप कूपन्स को क्रिएट कर सकते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट पे। कूपन्स क्रिएशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर द अमेज़न सेलर, सो दैट आफ्टर द कूपन क्रिएशन आपकी सेल्स आती है, आपका ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अमेज़न सेलर्स तक शेयर करें ताकि वो भी इससे नॉलेज ले पाएँ। सो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय बाय सेलर्स।